गहने बेच दिए, उधार ले लेते हैं इधर उधर से, क्या करे, बच्चे को पढ़ाए तो सही, उसका दिमाग अच्छा है पढ़ने में। The Khadi Gramodyog building in Dausa town wears a deserted look these days. The Khadi Gramodyog directly and indirectly employs around 2,000 families. All of them are without work, since the Rajasthan government imposed a lockdown in April to contain the second wave of the pandemic. Since these workers aren't on the payroll of the Gramodyog, they haven't been paid during the lockdown, unlike the salaried staff of the industrial unit. कम हो रहा है काम, पहले था वैसे बराबर नहीं हो रहा है, पहले बराबर चल रहा था, अब बिल्कुल कम है। काम है नहीं, यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से आते हैं, 9 बजे 11 बजे चल जाते हैं, कभी 2 बजे। Anil Kumar Sharma has been working at the Khadi making unit for 25 years. He takes pride in the awards and felicitations the unit has won in all that time. Lockdowns last year and this year have led to a decline in sales. In 2020, the unit sold Khadi products worth around 10 crore and 61 lakh rupees. This year so far, the earnings stand at rupees 5 crore and 47 lakh. This worries Sharma no end. He doesn't know for how long the Khadi unit can remain viable if the economic situation doesn't improve and soon. उत्पादन भी चालू रखना है। अगर हम उत्पादन चालू नहीं रखेंगे तो कत्तिन बुनकर को रोटी रोजी की बहुत बड़ी समस्या है। वो कहाँ से लेगा? वो तो हम ही पर है। हम उनको कहाँ से देंगे अगर बिक्री नहीं होगी? तो ऐसी परिस्थितियों में इस लॉकडाउन ने एक भयावह स्थिति हमारे सामने पैदा कर दी है। On 15 January 2021, Sharma wrote a letter to Chief Minister Ashok Gehlot requesting the state government to release the due money as part of rebate given to customers last year on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. On 20th April 2021, Sharma wrote another letter to the Chief Minister requesting him to allow Khadi weavers to start working again. He also wrote to Union Minister of MSME Nitin Gadkari as well. There was no response from either leader. गत साल स्टेट गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50% की छूट की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने। उससे बहुत अच्छी बिक्री हुई, लेकिन उस छूट की इस साल ज़्यादा आवश्यकता थी। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, नितिन गडकरी जी जो MSME के मंत्री हैं उनको भी ये ज्ञापन भिजवाया कि इस साल आप हमारी मदद कीजिए, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई। या राजस्थान सरकार में खादी बोर्ड में जो छूट का पैसा हमारा अटका हुआ है वो तो कम से कम हमें दिलवा दीजिए, जिससे कि हम हमारा काम चला सकें। लेकिन आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जब तक तो वो छूट का पैसा हमें अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। आश्वासन जरूर है कि मिलेगा। Dausa's Khadi industry has had a historical past, as people here tell us that among one of the 4 flags which were to be hoisted at Red Fort in 1947, one of them was from Dausa's homegrown Khadi industry. Today, however, owing to the month-long lockdown, this industry too is reeling under financial pressure. Even though social distancing was not that much of an issue, as individual homes have charkhas or looms available at their place. But since there was very little demand, as is clearly evident in the closed shutters behind me, there wasn't enough sale of Khadi fabric.
And Khadi is not the only industry that has suffered a setback in Dausa. In the nearby villages, there are people whose livelihoods are dependent on utensils made out of pital and steel. They too are having a hard time these days. At Balaheri village, 60 kilometers from Dausa, 50 families have been making brassware for at least 3 generations now. COVID has killed at least one person in the village, and the lockdown has hit hard the already precarious livelihoods of the artisans who are paid per piece. Not least because they are dependent on middlemen to sell their wares, the artisans get meager prices. The pandemic has only worsened their situation. Radha Govind Thatera has been making brassware since 1980. These pyramid-like structures he makes are usually used in temples. Items made of brass in Balaheri are in great demand in cities like Jaipur, Agra, Delhi and Mumbai. But there haven't been new orders for a while now. पहले जो लॉकडाउन नहीं था उससे तो हमारा जो रोज का रोटेशन में बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑर्डर 10% ही रह गए. Thatera has been commended for his work by the likes of former Chief Minister Vasundhara Raje Scindia. These photos of him are from an exhibition in 2018. Today, he and his family aren't sure if they can sustain brass making as a livelihood. इधर उधर से उधार लेते हैं और या फिर गेहूँ मिल जाते हैं हमें, तो वो उनसे कुछ, अब मजदूरी तो हमारी हो जाती है 10,000 15,000, कभी 20 भी हो जाती है, कभी 15 भी हो जाती है, कभी 10 ही रह जाती है. अब तो लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद है. 2 साल से तो बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाना. बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं है, बच्ची पढ़ रही है हमारी, BA B.Ed कर रही है, तो पैसा नहीं है, ना इसकी छात्रवृत्ति आई 3 साल से. In Dausa town, barricades bar entry to the main marketplace in Naya Katla. Retail shopkeepers say that they are losing between rupees 1 lakh and rupees 2 lakh on a daily basis because of the lockdown. 2 महीने का सेल पूरा साल का एक तरफ टर्नओवर और पूरे साल का टर्नओवर एक तरफ, तो अब उसको लगा सकते हैं हम कैलकुलेट करें. हर महीने हमको GST रिटर्न का फाइल करना होता है, पर लेकिन लॉकडाउन था तो हमने ये उम्मीद की थी कि लॉकडाउन के अंदर तो कम से कम गवर्नमेंट उसमें रिलैक्सेशन देगी और अपनी डेट जो GST रिटर्न फाइलिंग डेट जो है उसको एक्सटेंड करेगी. आज सभी रिटेल आउटलेट बंद है, पूरे ऑल ओवर राजस्थान, पूरे स्टेट में लॉकडाउन है, और उसके बाद में भी इन्होंने उस चीज़ के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी. एज इट इज़ कंडीशन पे उसको छोड़ा. लोगों को उसमें पेनल्टी बियर करनी पड़ रही है. आज भी रेगुलर मेरे खुद के 1 महीने से रिटर्न पेंडिंग है, उसकी 1 महीने की पेनल्टी 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ले रही है. Ashok Kumar Gupta started a second shoe store in Naya Katla on 18th April. A day later, the weekend lockdown was announced. He couldn't return his stock worth rupees 25 lakh and will have to wait until Diwali to pay off the loans he took to set up the new shop. सरकार ने पिछली बार मोदी सरकार ने जो राहत पैकेज की घोषणा की थी, वो तो हम तो आम बिजनेसमैन तो क्या समझेंगे, बड़े बड़े अफसर भी नहीं समझ पाए कि पैसा कहाँ तो आएगा और कहाँ जाएगा. मुझे लगता है सरकारी आंकड़ों में रह गया वो. हम लोगों को तो समझ में नहीं आया क्या होगा, या तो वो चोर खा गए, या ऊपर ही रह गया, या मिला कि नहीं मिला, या सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं रह गई. आज मैं तो कहता हूँ आज राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए. आज 2 महीने, मान लो 1 महीने हमने दुकान बंद रखी, उसका बिजली का बिल हम कहाँ से देंगे? वही उसकी हमसे पेनल्टी वसूल करने की तैयारी की जा रही है. कम से आप खुद सोचिए, जो दुकान ही नहीं खुली तो उसका एवरेज बिल भी हम क्यों दें? हमसे हमको कोई यूडी मतलब कोई नगर निगम टैक्स छोड़ देगा, या हमको बिजली का बिल छोड़ दिया जाएगा, या हमारी जो सैलरी लड़के लेते हैं उनको भी हमको देनी पड़ेगी. हमारी कौन सी छूट बताओ? हमको किस जगह रियायत मिली? सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही व्यापारी के लिए. व्यापारी के लिए सरकार सोचते नहीं है. और जो राजनेता बैठे हैं वो क्या खुद रैली करते हैं, चुनाव करते हैं, जब कोरोना नहीं फैलता उनको तो कोई बोलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा नीति वो बनाते हैं. COVID infections and deaths seem to be coming down in Rajasthan from the peak of the second wave in May. But the magnitude of the economic devastation the pandemic has caused will take a long time to assess, let alone address. For every artisan and trader, from brassware makers to shopkeepers and handloom workers, it seems the days of hardship are not going to be over anytime soon.